नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ग्लास के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और जो हमारा फोकस होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लास, हाउ ग्लासेस आर मैन्युफैक्चर्ड। तो किसी भी चीज़ को सबसे पहले बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उसी प्रकार ग्लास को भी बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक रॉ मटेरियल हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ग्लास को बनाने के लिए जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो क्या है। तो सबसे पहले जो ग्लास बनाना है तो उसके लिए हमें सैंड की ज़रूरत होती है। लार्ज क्वांटिटी में जो सैंड है, जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ये एक मेजर कंपोनेंट होता है ग्लास बनाने का, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद सैंड के बाद फिर सोडा ऐश, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ये रिक्वायर्ड होता है। सोडा सोडा ऐश क्या करता है कि जो आपका सैंड यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसके मेल्टिंग टेम्परेचर को नीचे ले आता है। तो इसलिए ग्लास को मेल्ट करना आसान हो जाता है। तो पहला इंग्रेडिएंट था सैंड, दूसरा था सोडा ऐश। तीसरा इंग्रेडिएंट जो रिक्वायर्ड है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो है लाइमस्टोन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, गैस को इनर्ट प्रॉपर्टीज जो है इनहेरिट करता है, और इससे ग्लास जो है वाटर में कम सॉल्युबल होता है और मोर स्टेबल होता है। तो ये प्रॉपर्टी आती है ग्लास में लाइमस्टोन के होने से, लाइमस्टोन की प्रेजेंस की वजह से ग्लास में ये प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद ग्लास को कलर देने के लिए हम कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पॉपुलर कलरिंग एजेंट हैं वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ये मॉल्टन ग्लास जो होता है उसमें इसको कलरिंग एजेंट को ऐड किया जाता है टू गिव द ग्लास डिजायर्ड कलर। इसके अलावा जो पुराने या टूटे फूटे ग्लास होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ग्लास खराब हो जाते हैं, तो उनको भी रिसाइकल करके जो है रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या है कि जो ग्लास बनाने का कॉस्ट है वो नीचे आ जाता है। तो बेसिकली आपके ये पांच जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए फिर इनको दोबारा एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है यानी रॉ मटेरियल है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए सैंड, सोडा ऐश, दूसरा तीसरा है लाइमस्टोन, चौथा है कलरिंग एजेंट, और पांचवा है रिसाइकिल्ड ग्लास। तो दोस्तों ये बात हो गई रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द ग्लास। अब ग्लास बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स यानी फेजेस होते हैं, जिसके थ्रू इस रॉ मटेरियल को पास किया जाता है, जिससे हमको फिनिश्ड ग्लास मिल सके। तो बेसिकली ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चार स्टेप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि बैचिंग करते हैं। बैच में रॉ मटेरियल को हम प्रिपेयर करते हैं, जिस भी तरह का हमको ग्लास चाहिए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है जिसमें रॉ मटेरियल को मिक्स करना चाहिए। तो वो हम थॉरोली रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं मिक्स करके। उसके बाद जब ये रॉ मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है तो इसको हम फर्नेस में भेजते हैं मेल्टिंग के लिए। जब ये मेल्ट हो जाता है यानी कि मॉल्टन स्टेट में हो जाता है तो कलरिंग एजेंट मिला के फिर इसको हम फॉर्मिंग के लिए भेजते हैं। तो हम अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं, जैसे फ्लोट ग्लास, फाइबर ग्लास। तो जिस तरह का भी ग्लास चाहिए होता है उसका एक बनाने का यानी फॉर्म करने का प्रोसेस होता है। तो जैसा कि ग्लास हमको रिक्वायर्ड है तो उसी हिसाब से हम फॉर्मिंग टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। तो तीसरा स्टेप होता है फॉर्मिंग ऑफ ग्लास। एक बार फॉर्मिंग के प्रोसेस से ग्लास निकल गया तो फाइनल जो है आपका ग्लास तैयार हो जाता है। इसको फिनिशिंग किया जाता है, और फिनिशिंग करने के बाद इसकी टेस्टिंग करके इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये पूरा स्टेप है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास। बेसिकली चार स्टेप है। आइए इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस प्रोसीड्स। तो सबसे पहले हो गया रॉ मटेरियल यानी कि बैचिंग, बैच में रॉ मटेरियल को मिक्स किया। दूसरा है मेल्टिंग, यानी कि ये रॉ मटेरियल फर्नेस में डाला गया, चाहे पॉट फर्नेस हो आपकी, चाहे टैंक फर्नेस हो, जो भी फर्नेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे इस रॉ मटेरियल को मेल्ट किया जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल मेल्ट होने के बाद इसको डिजायर्ड शेप एंड थिकनेस देने के लिए इसको फॉर्मिंग, जो डिजायर्ड फॉर्म है उसको देने के लिए इसको फॉर्मिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। फॉर्मिंग से प्रोसेस से गुजरने के बाद इसको ठंडा किया जाता है और इसको स्ट्रेंथन किया जाता है, जो कि अनीलिंग प्रोसेस है। अनीलिंग से ग्लास निकल के जब बाहर आता है तो इसकी टेस्टिंग की जाती है कि कोई इसमें कोई डिफेक्ट ना हो। और टेस्टिंग के बाद फिर इसको जो है आप डिजायर्ड
शेप में कट करके ब्रांड टैगिंग करके इसको आप जो है वेयर हाउस में भेज देते हैं, जहाँ से ये मार्केट में सर्कुलेट होता है। तो बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द ग्लास। तो अब आइए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जो है अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं, ताकि हमको जो है और अच्छे से समझ में आए कि फैक्ट्री में ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। It all begins with the Earth's most abundant raw materials. The primary ingredients are sand, lime and dolomite, soda and sulfate. Glass itself is also an important ingredient. Its recycling reduces the need for raw materials and accelerates the melting process. As a result, energy consumption is limited and less CO2, one of the main greenhouse gases, is emitted in the atmosphere. In addition to recycled glass, crushed or broken glass, called cullet, is added to the mixture. Cullet comes from both the manufacturing process and customers' scrap cuts. The mixture of raw materials used for melting is known as the batch. Its exact formulation varies whether transparent or colored glass is desired. The various raw materials are transported to the factory by truck or train and are stored in silos in the batch house. All these raw materials are rigorously checked to guarantee the purity of the batch. Each material is weighed by scale before being delivered automatically into the mixer. This is when recycled glass is added to the batch. Effective batch mixing is key to the melting process. Best glass quality can only be achieved when the batch has the necessary homogeneity. About 4 to 5 tons of the batch are conveyed around every 5 minutes to be distributed in the batch charger. During the process, a flat glass ribbon of uniform thickness is formed on a 500-meter long line. The batch charger regularly lays down raw materials at the furnace entrance on a part of the line called the doghouse. The raw materials drop on the 1300 degrees Celsius molten glass already contained in that area and are continuously pushed inside. In the melting zone, the batch of mixed raw materials melts at a temperature of 1550 to 1600 degrees Celsius until it becomes liquid and merges. Melting occurs by heat transfer from the flames located above the glass surface. Chemical reactions between the different elements allow the elaboration of high-quality glass free of bubbles. The process within the furnace is continually monitored by technicians who take measurements inside and from screens in the control room. The flames develop above the furnace. Every 20 minutes, their direction is reversed to optimize the thermal balance in the furnace and the efficiency of the flue gases heat recovery chambers. In the working end zone, to prepare the spreading of the glass over the tin bath,
it is cooled down from 1400 to 1100 degrees Celsius. A cold airflow is regulated for it to precisely reach the temperature and viscosity required at the forming zone. Glass is then ready to leave the melting furnace and enter an enclosed bath of molten tin. At that point of the process, the glass looks like honey. At the beginning of the float bath, glass coming from the furnace flows gently and spreads out, literally floating on the molten tin, to become a continuous ribbon of perfect flatness. The edges of the glass puddle are mastered by top rolls machines, which act on the spread surface of the glass. The top rolls effect, together with the exit speed of the ribbon, are the two main factors to adjust its thickness and width. In order to optimize the production performances, these steps are monitored from the control room 24 hours a day, 7 days a week. At the end of the float bath, the glass is cooled down further and leaves the tin bath at around 600 degrees Celsius, when it is just solid enough to climb on metallic rollers and be driven inside the layer. In the layer zone, the glass is annealed and gradually cooled to relieve inner stresses and prevent splitting in the cutting phase. Cooled down too quickly, it would break. The layer measures from 150 to 200 meters long and is made of two parts. The first one is the annealing zone, where the temperature decreases from 600 to 480 degrees Celsius and where permanent stress is fixed. This is a critical part of the process to give the glass a cutting quality that matches customers' requirements. The second part of the layer is the cooling zone, where, depending on its thickness, the ribbon is gradually cooled to reach a temperature between 50 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. At about 300 degrees Celsius, it becomes possible to lock out the downstream area of the line without impacting its upstream part. This can be useful for maintenance purposes, for instance. The operation, called water break, consists in sprinkling water on the surface of the ribbon to create a thermal shock effect that causes the glass to crack and break. Past the water break point, the layer is not covered anymore. The cold end is the last part of the production line. It includes quality control, cutting and stacking. The entire glass ribbon is continuously checked by a high-performance optical system to detect all kinds of defects. Thanks to the information received by the control system, an automaton maximizes the production of the ribbon with regard to the quality standards. Glass sheets are automatically created by a two-step cutting process in which the ribbon is striped and snapped along those strips to standard dimensions. The longitudinal stripes are made by a diamond wheel that creates surface defects on the glass. This prepares the ribbon for the subsequent cut of its edges, thereby removing the top roll marks and obtaining the net width. Then, the traversal stripes will determine the length of the glass plates. In the breakage area, the continuous ribbon is interrupted to form glass plates. The breakage operation consists in a lever effect made by an automatic breakout bar aligned with the transversal cutting line. Next, the edge rollers apply a pressure on the longitudinal cutting lines to trim the glass plates. The edges, together with any glass area not fulfilling the required quality standards, go back into the furnace for recycling. The plate thus formed is then carried by rolls at higher speed to separate it from the continuous ribbon. These final glass sheets are absolutely transparent and have perfectly smooth surfaces. They are ready to be automatically stacked as calibrated piles of glass, weighing from 2.5 to 20 tons. The glass piles are offloaded thanks to special handling machines called transloaders. The glass is then conveyed to the warehouse for storage or to the expedition area, ready to be sent to customers.
तो दोस्तों ये एक डिटेल्ड वीडियो था ऑन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द ग्लास। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रॉ मटेरियल से जो है फाइनल ग्लास तक का जो स्टेज है वो हम कैसे पहुंचते हैं, फैक्ट्री में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। और जो है इस पे जो है इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है ग्लास का वो हम समझने की कोशिश किए हैं। आगे और वीडियोस में हमने ग्लास के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप अगर ग्लास को और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उस पार्ट को भी आप देख सकते हैं। हमारा यह डिस्कशन आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करिएगा। और यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।